ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन एंड उसके बाद मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन के यूज पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक छोटा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पढ़ेंगे एंड आखिर में इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। चैप्टर धीरे धीरे करके उसके खत्म होने तक जा रहा है। रेगुलर से सेशन देखते रहना। कैनिज़ारो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये एक नीम रिएक्शन है। आगे आइडोल क्रॉस आइडोल करके आए। आइडोल क्रॉस आइडोल का कंडीशन ये था कि अल्फा एच मैंडेटरी, अल्फा एच होना चाहिए। अगर अल्फा एच नहीं होगा तो आप आइडोल या फिर क्रॉस आइडोल नहीं करवा पाओगे। पर मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल यहां पर है, मॉलिक्यूल आपके पास एक है यहां पर जो है फॉर्माल्डिहाइड। आपके पास एक मॉलिक्यूल है बेटा फॉर्माल्डिहाइड, मान लीजिए दूसरा भी मॉलिक्यूल है फॉर्माल्डिहाइड। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने जो रिएक्शन मिक्सर बनाया वहां पर सिर्फ एक ही फॉर्माल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेके बैठ गए, वैसा तो पॉसिबल नहीं होगा। सही है, आपके पास दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड यहां पर प्रेजेंट है। तो देखो कौन सा कंडीशन, क्या सिचुएशन, आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा कॉन्संट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में। आइडोल क्रॉस आइडोल निकाल के देखो वहां पर क्या आ रहा था, डाइल्यूट NaOH आ रहा था। याद है, अगर आपने कॉन्संट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में थोड़ा हीट देना पड़ेगा, या आगे का रिएक्शन याद करो, वहां पर 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा था। यहां पर आप थोड़ा हीट दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस दोगे, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो आप क्या बनाओगे, ध्यान से देखना। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो आप बनाओगे HCOOH, जिसे बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। एक्साइटेड मत बनो, पहले देखो मैं क्या समझा रहा हूं। सही है, फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसका अगर रिड्यूस कर दिया तो आपको ये देगा CH3OH, मिथेनॉल। ओके ठीक है, ऑलरेडी आपने बेस दिया हुआ है। अगर आपने बेस दिया हुआ है तो आपका फॉर्मिक एसिड वो बेस के साथ रिएक्शन लगाने के बाद HCOO- Na+, अगर आपने KOH दिया होता तो यहां पर आपको HCOO- K+ देगा। सही है, मतलब एग्जैक्टली अगर आप एनसीईआरटी निकाल के देखोगे तो वहां पर आपको फॉर्मेट, इसे फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट या फिर पोटेशियम फॉर्मेट बोला जाता है। तो आपको सॉल्ट दिया होगा एंड एक अल्कोहल दिया होगा। तो कुछ इस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन काम करता है। बहुत लकी हो, यहाँ पर आपको उसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, आपके बुक में नहीं दिया गया एंड आपके जेईई या फिर नीट के सिलेबस में भी इसका मैकेनिज्म नहीं है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जब कोई एक ही कंपाउंड में एक ही सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा हो या फिर रिड्यूस हो रहा हो तो उसे बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कंडीशन याद रखना, कॉन्संट्रेटेड NaOH एंड कॉन्संट्रेटेड KOH, ये आपको लेना पड़ेगा। हीट थोड़ा देना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फॉर्मिक एसिड बनेगा फॉर्मेट का सॉल्ट। दूसरा एक रिएक्शन मैं साथ में करवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अल्फा एच नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अल्फा एच शुड नॉट बी देयर, अल्फा एच नहीं होना चाहिए, तभी कैनिज़ारो रिएक्शन करवा पाओगे। दूसरा रिएक्शन देखना है हमें, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, सॉरी यहाँ पे आएगा बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे। इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, यही रिएक्शन लगवाना है कॉन्संट्रेटेड NaOH के साथ। थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड कर दो तो एक आपको कन्वर्ट होके देगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, एंड दूसरा आपको कन्वर्ट होके देगा
सोडियम बेंजोएट। अब याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सोडियम बेंजोएट होता है ये फूड प्रिजर्वेटिव है। आप कोई भी जंक फूड निकाल के ले लो, लेस का पैकेट ले लो या फिर कोई भी वेफर का पैकेट ले लो, उसके पीछे लिखा मिलेगा सोडियम बेंजोएट डाला गया है। तो सोडियम बेंजोएट ये एक फूड का प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये उसकी लैब टेक्निक हो गई प्रिपरेशन करने के लिए। इसके साथ ही कैनिज़ारो रिएक्शन यहीं पर ही खत्म हो रहा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन के यूज। लास्ट सेशन में हम लोग थोड़ा देखेंगे, मतलब हमारा जो भी लास्ट लेक्चर आ रहा है वहां पर हम लोग देखने जाएंगे इंट्रो टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके सो दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इसका कार्बोक्सिलिक इसका एल्डिहाइड कीटोन का यूज। उससे पहले एक छोटा रिएक्शन जो बचता है वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आपने बेंजाल्डिहाइड लिया एंड उसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा, इससे क्या होगा? इससे होगा नाइट्रेशन। अगर आपने उसका नाइट्रेशन करवाया ना तो नाइट्रो ग्रुप बनेगा जिसे आपको लगाना है मेटा पोजीशन पर। मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड इसका फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना जो CHO ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। CHO ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन हो गया जो मेटा पे NO2 डायरेक्ट करके लगवाएगा, जो मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाएगा। तो इसके साथ जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल रिएक्शन थे वो ऑफिशियली यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में एक छोटा टॉपिक आता है जो है यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सेक्शन में डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन कहाँ पर यूज होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, वेनिलीन, सिनेमैल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, वो सारी चीजें, एस्पिरिन, ये सारी चीजें जो होती है ना वो सारी चीजें फ्लेवर्स के लिए यूज की जाती है। बेसिकली एस्पिरिन जो होती है वो ड्रग पर्पस के लिए यूज की जाती है। दूसरा आएगा कीटोन्स का यूज। तो कीटोन में सबसे बढ़िया जो कीटोन होता है वो है एसीटोन। एसीटोन का यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर की तरह। तो ये चीजें याद रखो। बेंजाल्डिहाइड का जो स्मेल होता है वो बिटर आलमंड का स्मेल होता है, ये चीज याद रखो। एंड जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है ना वो एक बार जाके निकाल के देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो होगा इंट्रो टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब चैप्टर का जो नेम है ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करना है। ओके तो शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी। उससे पहले लास्ट रिएक्शन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो लास्ट मतलब पोर्शन लेक्चर का हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो होगा इंट्रो टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखो बेटा, बहुत इजी वाला पोर्शन है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली होता क्या है? वो होगा RC डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे होगा OH। क्लियर? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा वेरी गुड एसिडिक हाइड्रोजन, वेरी गुड एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने इस हाइड्रोजन को लॉस कर दिया तो बहुत अच्छे से जो बनेगा यहां पे, क्लियर है, यहां पर रेजोनेंस, स्टेबिलिटी आता है। इसकी वजह से ये H+ बहुत देर तक मतलब सेपरेट रह पाएगा।
इस वजह से उसे बहुत गुड एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरे ऑर्गेनिक में जितना हमारा सिलेबस है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक एसिड होगा। सही है, ओके। अब हम लोग थोड़े बहुत ऑर्गेनिक एसिड मतलब थोड़े बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम देखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते एंड मार्क्स घुमा लेते हैं। याद रखना, जो आप फैट खाते हो ना, वो फैट भी बहुत बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब C17 को लेके बात करो, मतलब कार्बन 17 से जितना बड़ा होगा, 17 से लेके 35 तक, वहां पे फैटी एसिड्स एग्जैक्टली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्लिसरॉल सॉल्टिंग होता है। सही है, तो अभी हम ये देखना है सम बेसिक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सब कॉमन नेम है ना, वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे HCOOH, जिसे बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम तो आप जानते ही हो, मेथेनॉइक एसिड। दूसरा आता है CH3COOH, जिसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। इससे विनेगर का फॉर्मेशन होता है, जिसे सरका बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन एसिटिक एसिड से होता है, विनेगर का फॉर्मेशन। नंबर 3 पे आएगा CH3CH2COOH, जिसे बोला जाता है प्रोपियोनिक एसिड। नंबर 4 पे आएगा CH3CH2CH2COOH, जिसे बोला जाता है ब्यूटरिक एसिड। इस एसिड का नाम है ब्यूटरिक एसिड। एग्जैक्टली यही एसिड बटर में फाइंड होता है। फॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा रेड एंड में, इसी वजह से उसे बोला जाता है फॉर्मिका। सही है, एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता, मतलब विनेगर आप एसिटिक एसिड से बनाते हो। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट COOH, इसे बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसे ऑक्सैलिक एसिड भी बोला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नंबर 6 COOH, बीच में आएगा एक CH2COOH। मालोइक एसिड, इसे बोला जाता है मैलोइक एसिड। इस एसिड का नाम है मैलोइक एसिड। जो ग्रीन एप्पल का टेस्ट होता है वो इसकी वजह से आता है। नंबर 7 COOH, CH2 को 2 टाइम्स कर दो, COOH, इसे बोला जाता है सुसनिक एसिड। ये सब कॉमन नेम है बेटा, ये आपको याद नहीं है कि बाकी का नाम बनाना आसान है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये इतना आसानी से नाम याद नहीं रहेगा। 8 नंबर पे आएगा COOH, CH2 twice COOH, सॉरी 3 टाइम्स COOH। इसका नाम है ग्लूटिनिक एसिड। एक बार एनसीईआरटी निकाल के ग्लूटिनिक का एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पे ये होगा ग्लूटिनिक एसिड। जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ग्लूटिनिक एसिड। नंबर 9 यहाँ पे आएगा COOH, CH2 4 टाइम्स COOH। इसे बोला जाता है एडिपिक एसिड। इसे खास याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एडिपिक एसिड का आप यूज करोगे पॉलीमर चैप्टर में। जब आप नायलॉन फाइबर्स का प्रोडक्शन करना चाहोगे ना, तब आपको एडिपिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। थोड़े और है जो एरोमेटिक वाले होते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड। सही है, इसे बोला जाता है CH2COOH, फिनाइल एसिटिक एसिड। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा COOH। इसे बोला जाता है पैथिलिक
एक बार जाके टेबल निकाल के देखो, इसकी IUPAC नेम के बारे में देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में उसके कॉमन नेम ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके कॉमन नेम ज्यादा पूछे जाते हैं। टेबल निकालना एक बढ़िया मिलेगा। कार्बाइलिक एसिड जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि आप जाके देखोगे नहीं, अगर मैंने सब यहाँ पे पढ़ा दिया। एक बार जाके टेबल निकाल के देखो, कार्बाइलिक एसिड जो इसके बिल्कुल नीचे दिया हुआ है टेबल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार रेडी कर देना। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही। नोट बनाना है रेगुलर से, भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया तो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट द लेक्चर। रियली थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन निकल के आ रहा है ना, उसे थोड़ा अलग से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ इसे मिक्सअप मत कर देना। सही है, एक बार जाके अब जब भी टाइम मिले तो एल्डिहाइड कीटोन वाले सब सेशन एक बार रिवाइज कर दो, ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो मिक्सअप ना हो जाए। थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट करें। The synthesis of benzyl alcohol and benzoic acid. Attention! In this video, caustic, toxic and highly flammable compounds are used. Especially when working with diethyl ether, all precautions have to be taken. I don't take any responsibility for damage done to persons or property caused by the replication of this experiment. First, 27 grams of potassium hydroxide were dissolved in 18 milliliters of distilled water. When the solution had heated up to its maximum, it was stirred. Then the beaker was covered and put aside until the solution had cooled down again. When the solution had cooled down, 30 grams of freshly distilled benzaldehyde were added to a 250 milliliter round bottom flask. Then the potassium hydroxide solution was added. The flask was closed with a stopper and a clamp and shaken until an emulsion had formed that did not separate again. The following reaction takes place. One half of the benzaldehyde is reduced to form the alcohol, which causes the other half to be oxidized to the carbonic acid, so this is a disproportionation. When an aldehyde has no hydrogen atom in the alpha position, this reaction takes place and is called Cannizzaro reaction. The mechanism consists of two paths. In the first one, the aldehyde group is attacked by an hydroxide ion which acts as a nucleophile, leading to a diol of which one OH group is deprotonated. This is then deprotonated by another hydroxide ion, which causes a dianion to form. The hydrogen atom of the dianion acts as a nucleophilic hydride ion and attacks another aldehyde group. This leads to a deprotonated carboxyl group and an alkoxide. The alkoxide is then protonated by the water and benzyl alcohol and benzoic acid are formed. On the second path, the diol which has one deprotonated OH group reacts differently. Here the attack of the nucleophilic hydride ion happens already in this step, leading to a protonated carboxyl group and an alkoxide. The alkoxide is protonated by the carboxyl group, leading to the formation of benzoic acid and benzyl alcohol. When the emulsion became a little thicker, the clamp was removed, the flask was clamped to the ring stand and the stopper was loosened. The mixture then begins to heat up and can become very hot, which causes the air in the flask to expand. In this case, the flask became so hot that it could barely be touched for a while. When the flask was only slightly warmer than body temperature, the clamp was added again and the mixture was left to sit overnight. On the next day, the mixture should have lost the smell of benzaldehyde, which was not the case, so it was left to sit for another day. On the next day, this didn't change, so the next step was done. This should have only a slight effect on the yield. Next, a bit of distilled water was added and the flask was shaken vigorously. The goal is to dissolve the mixture in as less water as possible.
In the end, a cloudy solution was obtained. The cloudiness might be due to the benzyl alcohol being only moderately soluble in water. The solution was then added to a separating funnel. The flask was washed out with some distilled water. Next, the solution was washed 5 times with 30 ml of diethyl ether. It's important to vent a few times, otherwise the pressure that builds up might get too high. The benzyl alcohol is highly soluble in the ether, while potassium benzoate stays in the aqueous layer. MTB ether or dichloromethane could be used instead, where the latter would cause the lower layer to be the organic layer. The stopper was loosened and the layers were left to separate. The lower aqueous layer was separated where it is better to have a slight amount of the ether in the aqueous layer than the other way around. Extracting several times causes the benzyl alcohol to be removed completely, while the high concentration of potassium benzoate in the aqueous layer stays constant. The organic layers were collected in another separatory funnel. The aqueous layer was then washed with ether again. Here are the both solutions, where the organic solution contains the benzyl alcohol and the aqueous solution potassium benzoate. Both were somewhat cloudy because they contain traces of the other layer, which is not a problem. First, the organic solution will be worked up. For this, 6.7 grams of sodium metabisulfite were mixed with 10 milliliters of distilled water, but a few more milliliters had to be added until the metabisulfite had dissolved completely. Then half of the solution was added to the organic solution. It was shaken for 5 minutes and repeated with the other half of the metabisulfite solution. When sodium metabisulfite is dissolved in water, it is hydrolyzed, forming sodium bisulfite. This can react with aldehydes and ketones in a bisulfite addition reaction to form a water-soluble compound and remove benzaldehyde. After that, it was washed with 10 ml of a diluted sodium bicarbonate solution and 20 ml of distilled water. The bicarbonate removes traces of benzoic acid and the water removes residual salts. Then the solution was added to an Erlenmeyer flask and dried with anhydrous sodium sulfate. A good amount of anhydrous sodium sulfate is added and the flask is swirled, leading to the solution to become clear very quickly. When the sodium sulfate is flowing freely, the solution is dry, but it is left to sit for a few minutes. Next, the sulfate is usually filtered off, but it was decided to simply pour off the solution. This prevents larger amounts of diethyl ether from evaporating. Then it was set up for simple distillation. A water bath was used for heating, but an oil bath could also be used at this point already. The receiving flask was cooled with ice water due to the highly volatile ether. After a short while, the ether began to boil. The temperature on the thermometer was at 35 degrees, which is at the boiling point of diethyl ether. The goal is to remove as much of the ether as possible, because otherwise too much of it would evaporate in the next step. When the volume in the distilling flask became very small, the solution was transferred to a smaller flask.
The flask was washed out with a bit of ether. Then the distillation was continued. When the distillation became slow, the temperature of the water bath was increased. At the end, the temperature of the water bath was at 90 degrees C and the distillation became very slow. So the distillation was stopped and the receiving flask was swapped to an empty one. The water bath was changed to an oil bath. To the vacuum stopper, a diaphragm pump was connected. An oil pump could be used instead, but then a cold trap has to be added between the apparatus and the pump. At first it is not heated but stirred vigorously, and then the pump is turned on. The condenser is already running. Residual ether evaporates immediately, which can become dangerous with larger amounts of ether. Only after adding the vacuum, the apparatus can be heated. After a short while I noticed that the thermometer adapter couldn't keep the thermometer in place, so it was slowly sucked into the apparatus. Luckily nothing did break and the apparatus was not heated up very much at this point. The apparatus was vented carefully, the thermometer adapter was removed and a glass stopper was added instead. After a while, the product in the distilling flask began to boil, but nothing was distilled, so the apparatus was isolated. Then the product could reach the condenser. Benzyl alcohol has its boiling point at 205 degrees C, which is why it has to be distilled in a vacuum. Vegetable oil begins to smoke slightly at this point, and the distilling bridge could break at the cooler due to the temperature difference. The temperature of the oil bath was at 114 degrees C, which meant that the benzyl alcohol has to boil below this point, so the vacuum of the pump was strong enough to lower the boiling point by around 100 degrees C. Due to the somewhat low temperature, the distillation was left to run until it died down by itself. Usually a distillation is not left to run until dryness. The residue in the flask indicated that the vacuum distillation was useful. Nevertheless, 2 drops collected in the product within the distillation which later dissolved again. Next, the refractive index was determined. This was close to the literature value of benzyl alcohol. The deviation might be due to the impurity, but the refractive index of benzyl alcohol with a purity of at least 99% is said to be at 1.390. So the impurity can be neglected when using it in a further synthesis. 12.1 grams of benzyl alcohol were obtained, which corresponds to a yield of 79%. To improve the yield, I would recommend to use a microdistilling bridge. Next, the aqueous solution was worked up. The flask was washed out with some distilled water. Then the solution was acidified with half-concentrated hydrochloric acid while stirring. This causes the benzoic acid to be protonated while potassium chloride is formed. The protonated benzoic acid is sparingly soluble in cold water. The goal is to get the solution to a pH of 2 or 1.
A large amount of acid had to be added, which was the reason why a larger beaker had to be used at some point, so it would be better to use a large beaker from the beginning. At the end, some concentrated hydrochloric acid was added to reach the desired pH. Then the mixture was put in the fridge overnight so all of the benzoic acid could crystallize. It was then removed from the solution with a vacuum filtration. Residues were washed out of the beaker with distilled water. It was left on the pump for a while to dry it, but this is not necessary. The benzoic acid was then transferred into a 500 ml round bottom flask for recrystallization. A simple reflux apparatus was set up with an oil bath and a Dimroth condenser. A small amount of solvent was added through the condenser as it is usually done in a recrystallization. When the solvent is boiling, another small portion of the solvent is added and it is left to heat up until it boils again. The goal is to get a boiling saturated solution. Unfortunately, it was not considered that about 250 ml of boiling water were needed to dissolve this amount of benzoic acid. So at least 200 ml of distilled water could be added from the beginning to save some time. Interestingly, the undissolved benzoic acid was present in droplets instead of crystals. When everything had dissolved, the flask was removed from the oil bath. Within 10 minutes, needle-shaped crystals were formed. The flask was left in the fridge overnight and the crystals were filtered off. It was then washed out with some distilled water again. Then the crystals were sucked dry again for several minutes. After that, they still contain a lot of water, so they have to be dried in air or in a desiccator. As a desiccant, concentrated sulfuric acid was added to the bottom. It was not put under vacuum because benzoic acid is able to sublime. At the end, 15.2 grams of benzoic acid were obtained, which corresponds to a yield of 88%. The melting point of benzoic acid is at 122 degrees C, but the product was only at 117 degrees C. The commercial product had the same low melting point, so there might be traces of water that are not removed as easy. This was the synthesis of benzyl alcohol and benzoic acid. I hope you enjoyed. Please rate and comment. If you want to see more synthesis, you can watch my playlist here, or you can watch my latest video here. A big thanks to my supporters on Patreon.